वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? Good evening, sir. ऑल राइट, so today basically what why we have gathered here, right? There are one very important thing that you all have to understand is that it's not only about learning. Okay, it's about application also. Yes. So today that's why, based on past experiences, have you seen that students do prepare a lot, right? They again start preparation just like you prepare for CA finals, but some very few actually apply those knowledge, right? And that is what is required uh, in your campus and interviews. So application is something very important, right? So far, most of you who are our current students and those who are new also, whatever is your preparation level, right? Don't feel that we are new or we have not yet started, right? Whatever is your preparation level, yes, you should try to give the answers for the questions that will come in front of you. Second, for some of the questions, certainly we will do some cross questions also. Okay, so you should be ready with that as well. Okay, so before I start, yes, how much how much you are confident about your interview preparations, right? Let's take some quick answers from all of you. कैसी preparation है? Yes, Jayesh. Confident, not confident? Sir, not 100%, but हाँ confident. Very good, very good. Yeah. Okay, great. So I believe आप लोगों की सबकी preparations अभी चल रही है. Okay, and in between, right, this is the right time actually to judge how much you have prepared or how much you have revised. ठीक है, सो आप लोग सभी लोग अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए सो दैट वी विल मेक इट इंटरैक्टिव एंड आई विल आल्सो टेल यू दैट हाउ वी विल प्रोसीड अबाउट इट. Those who are new, basically, my name is Gunjan Srimal and I am lead trainer at Camp Prep. Camp Prep is basically the campus preparation institute, and we are training CA freshers for last 5 years and have seen almost 10 different batches. I've spent quite a long time in the industry and then applying that knowledge in the training and trying to help students on account of that, right? So yes, basically let's start with the uh, instructions, right? So instructions are very simple. First of all, these questions are from the previous campus. Okay, so that is mostly you will find that the question, yeah, those who are not able to switch on their videos, that is fine, no problem. Okay, but yes, definitely, if you can, yeah, that would be great. Okay, you know how to raise hands in Zoom. सभी को पता है ना Zoom में हैंड रेस कैसे करते हैं? राइट, किसी को नहीं पता हो तो एक बार ट्रायल करके देख लो. ओके, गुड 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 गुड. ऑलराइट, अच्छी बात है. ठीक है, सो आप लोग आंसर, कोई भी आंसर होगा, राइट, आपको उसको चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, आपको सिंपली अपने हैंड रेस करना है. ठीक है, नॉर्मली हम लोग ये करेंगे कि जिसका सबसे पहले हैंड रेस होगा उसी से आंसर लेंगे. लेकिन सपोज अगर दो लोगों का एक साथ रेस हुआ तो डेफिनेटली लाइक इट विल बी ऑन माय जजमेंट दैट आई विल आस्क फर्स्ट. सेकंड इज दैट अगर आप इसमें हम लोग देखेंगे कि मार्किंग्स करते जाएंगे, राइट? जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स, जिसके सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर्स होंगे, राइट, डेफिनेटली ही विल बी द विनर. ओके, तो नॉर्मली जो क्विज में होता है कि जिनके सबसे ज्यादा होते हैं
they become the winner. उसके बाद it goes on like that. ठीक है, so आपको यही कोशिश करनी है कि like you have maximum number of आंसर्स, राइट? ये आपको कोशिश करनी है कि आपके सबसे ज्यादा आंसर्स हों, ठीक है? अच्छा, जिन लोगों की प्रिपरेशन अगर कम है, आंसर नहीं भी दे पा रहे हो, डोंट वरी, ओके, यू शुड लिसन टू दिस पर्टिकुलर सेशन, राइट? आपको लिसनिंग से भी काफी फायदा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आपको लग रहा है कि आई डोंट नो द आंसर बट आई जस्ट वांटेड टू अटेंड द सेशन, यस यू कैन डू सो एज वेल, ठीक है? ऑल राइट, सो शुड वी स्टार्ट? Okay, so let me start with the first question. First question is, what is the world population? World की population कितनी है? या मनुष्य बताइए। So it's around 8 billion. 8 billion. Very good answer, right? Okay, good job. So, although ये एक ट्रायल क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी like this, it's a good answer. So I am counting this question also. Okay. So this is question number 0. Okay, and this is how you have to answer it, right? First, she has raised her hand, and then I asked her to unmute her. She unmuted her, and then she answered. Okay. Then there will be some cross questions also. I'll ask the cross questions as well. Yes. All right. So great. हाँ शुभम बोलिए। Okay, you were just testing, हाँ ठीक है। चलिए, so let's start with the first one. Okay, so सब हम लोग इसको technical questions लेंगे, right? So first one is the technical questions. Second, we'll take few general knowledge related questions as well, right? So mostly it is technical questions. So सबसे पहले हम लोग India's based questions लेते हैं, ठीक है? Let's start with that. So this is the first question. Okay. The first question is that there is a health club and they have a yearly membership of 12,000. For 1 month, they have given a free promotion to all residents. How much revenue for that particular month should be recognized as per Ind AS 115? All right. So we have got 3 hands. Okay. All right. So first, again, Zoom के हिसाब से सबसे पहले मानुषी. Okay. Yeah, Manushi, please answer. Good evening, sir. Yes, good evening. Sir, अगर हमारी सेल होती है तो we have to record the journal entry, that is bank to sales, and we can record the journal entry monthly wise. So bank to sales, that is 12,000, All right. and if Okay. it is not earned, that हम उसको record करते हैं, that is to unearned income. All right. But the question is not the journal entry, right? The question is that how much revenue will you recognize? Sir, it is 0. Zero, no revenue. Why? No revenue, because sir, it is a free for 1 month. All right. So तो पर्टिकुलर मंथ के लिए सर अगर मैं 0 से देखूं इनिशियली, तो फॉर 1 मंथ इट इज 0, बट फॉर फर्दर इयर्स दे विल बी चार्ज एट 12,000 proper, or we can divide it by 12. All right. But my question to you is that for the remaining 11 months, you will be paying 12,000. Yes sir. So you will recognize 12,000 in remaining 12 months, remaining 11 months, right? सर राइट सर, वी हैव अ चॉइस फॉर दैट ना, कि अगर आप मंथली करना चाहते हैं तो मंथली भी कर सकते हैं इन 115 रेवेन्यू रिकॉग्निशन मॉडल में, और अगर आप चाहें तो ईयरली भी कर सकते हैं।
We have a choice, sir, in that in days. So if I want, I can recognize all 12,000 in first year, right? Yes, In sir. the first month. Yes, sir. All right. Okay. ओके सो आप बोल रहे हो पूरा 12,000 हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन सवाल एक्चुअली थोड़ा सा अलग है। मैं थोड़ा सर अगर मैं पर्टिकुलर मंथ की बात करते हैं, अगर वो 0 के लिए कर रहे हैं तो फॉर 1 मंथ इट इज टोटली फ्री, तो इट इज नो रेवेन्यू। ओके एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? Because sir, it is a free for all particular for all residents, free promotion for a promotion purposes, sir. बट फॉर नेक्स्ट मंथ दे आर चार्जिंग समथिंग फ्रॉम Yes sir. नेक्स्ट मंथ, Yes sir. सो फिर नेक्स्ट मंथ से सर हम चार्ज करना स्टार्ट करेंगे। okay, and if it is compulsory that if you are taking our trial and it is सॉरी compulsory that you have to opt for our services, then कि पहले मतलब ट्रायल के बाद यू हैव टू मतलब ऑटोमेटिकली स्विच टू पेड सर्विसेज। correct. सर इट इज बेसिकली अप टू द जिम, जो भी जिम में काम करते हैं कि उन्हें लेना है कि नहीं लेना है। इफ इट इज ओके विद दैट देन वो ट्रायल के लिए जाएंगे। Correct. No, the policy of the gym is that they will charge you once you will take their free promotion, then you will accept anything or not. I mean, you will record revenue. So 1 month, initial month, no revenue, and then remaining months, it is a revenue, 12,000. One-time membership. All right. Okay, good. Okay, so good answer. Just a second, I'll write it down also. Okay, I hope everybody has got the question, right? So first answer which I've got is that no recognition, right? No recognition of revenue, right? Even if they have to compulsorily opt for membership after next month, right? Let's take another answer. Yes, next देखते हैं किन्होंने हैंड रेस किया था। After Manushi, it is Ajay Singh. Yes, sir. Then revenue should not be recognized because customer has right to let the contract without paying any penalty in first month. Sorry, वापस बोलिए। The revenue should not be recognized Okay. because customer has right to let the contract without paying any penalty in first month. All right. But if there is a compulsion that they have to opt for, then in that case, The revenue should be recognized in that case over period of 12 months, 1,000 per month, sir. all right. Okay, good है। चलिए अब हम लोग इसका फाइनल आंसर ले लेते हैं, ठीक है? सो एक आंसर और ले लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन को आगे कैरी करते हैं। So one more answer, just Shubham. Hello. Am I audible to you, sir? Yes, बोलिए। Sir, Ind AS 115 says that we have to recognize revenue on the basis of satisfied over time or point of time. But if we receive a membership service, if we receive any amount against a membership service, then we have to recognize, because we have not given any service and amount has been received. We have to recognize the revenue on the basis of satisfied over time over a period to which we are giving service to a customer. So you will recognize in the very first month or not? That is the question. No. We will recognize it proportionately over a period of time, sir. Okay. So my question is again to you is that in the first month you will recognize revenue or not? We will not recognize revenue on the first day. First month, I'm saying. No, we will not recognize revenue. Even if compulsorily they have to take membership. Yes, we will not recognize revenue. All right, great. Okay, so see, like I would like to tell you
two things here. Okay, one is that your answer has to be complete enough. Okay, everyone, like I've got 3 answers. Okay, complete answers होने चाहिए आपको. Your answers are not complete. You answer देने के बाद mute कर लीजिए शुभम, please. So your answer has to be complete enough, right? Your answers are not giving all kind of scenarios. Okay. So the first scenario in this case is that if that person has to compulsorily take the membership, and second scenario is that the person is not under compulsion. या तो उनको मेंबरशिप लेनी है या फिर उनके पास चॉइस है आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना. 2 ही सिनेरियो बनते हैं इसमें. ठीक है, तो दोनों ही पहले जो सिनेरियो है कि उनको कंपलसरी लेना है अगर मेंबरशिप, तो उसमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा. ठीक है, उसमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा. और अगर उनको कंपल्शन नहीं है तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा. ठीक है, सो मानुषी एंड शुभम, आपको अपने आंसर्स को करेक्ट करना है. ठीक है, एंड द राइट आंसर हैज कम फ्रॉम अजय. ओके, गुड जॉब अजय. Yes. ठीक है, सो ऑल्दो हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं अजय, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर सर्टेनली फ्रॉम यू. करेक्ट आंसर ही आना चाहिए था आपसे. यस, सो अच्छी बात है, यू गिव द राइट आंसर. ओके, सो आंसर नंबर 1 अजय. ओके, so any confusion on this one? Anybody has any confusion this question? The Ind AS 115 has a condition, contract with customers, that you can recognize revenue. The contract can be considered as a contract only if it is not cancelable from either of the side without any penalty, right? तो अगर उनको बिना पेनल्टी के ये ऑप्शन मिल रहा है कि दे कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में ही नहीं आएगा, है ना. और इस केस में हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. लेकिन अगर उनको कंपल्शन है कंटिन्यू करने का, तो हम रेवेन्यू पूरा रिकॉग्नाइज करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ, क्योंकि हमने सर्विसेज दे दी हैं और उनको कंपल्शन भी है उसको कंटिन्यू करने का, तो हम फर्स्ट मंथ से ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे. राइट, सो इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है इन कैंपस के अंदर, आप लोग ध्यान रखिएगा. ओके, बट गुड ट्राई, good work. Yes, I will expect others also to come forward and answer. Okay, now this is another question that goods are dispatched from factory. Okay, बाकी लोग hand down कर लो please. Okay, एक बार वापस please hands down कर लीजिए, because वो पता नहीं चलेगा नहीं तो. मानुषी, yes, can you please put your hand down? All right, okay, चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ फिर इस पे आता हूँ. Okay, so this is a builder is designing a house, okay, on 1st of Jan, right? And the designing revenue is 2 lakhs. Then same builder is constructing on 1st of March. Designing revenue is construction revenue is 10 lakhs, and it is maintaining on 1st of April. From 1st of April, 1 lakh per annum. How many performance obligations are there, and how much revenue shall be recognized and when? All right, Umesh. Yes, बोलिए. Hello, sir. Am I audible? Yes, please. Sir, since the same builder is designing, constructing, and maintaining the house or building, so it would be a single performance obligation to the customer. Even though contract might be different, but it would be a single performance obligation. And revenue will be recognized on the basis of percentage of completion method. Based on the cost incurred, means if out of total 10 lakhs, 2 lakhs has been incurred, so 20% of the revenue will be recognized up to the time period up to which 2 lakhs has incurred cost. Means percentage of completion method. Okay, so for example, you are saying that this 1 lakh, okay, sorry, this 2 lakh, when this 2 lakh Yes. will be recognized?
सर जैसे 1 जनवरी को 2 लाख का कॉस्ट इंकर हुआ है ना, वो 2 लाख का कॉस्ट डिजाइनिंग में। नहीं, ये रेवेन्यू है बेसिकली, बट फॉर अ टू कीप द कॉन्सेप्ट सिंपल, अज्यूम दैट कॉस्ट भी उतना इनकर हुआ है। कॉस्ट भी उतना इंकर हुआ है, हम्म तो सर हम टोटल कॉस्ट में से जो कॉस्ट इंकर हुआ है वो परसेंटेज निकालेंगे, और टोटल रेवेन्यू का वो परसेंटेज रिकॉग्नाइज करेंगे, और जो डिफरेंस का पोर्शन होगा ना, उसको लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर देंगे इन केस अगर ज्यादा आ गया है तो, डेफर रेवेन्यू लायबिलिटी वन सेकंड वो सो आगे चल के रिवर्स कर देंगे। okay, so let me double clarify what you're saying. How many performance obligation are there? You are saying one. वन And परफॉर्मेंस how ऑब्लिगेशन। much revenue will you recognize? You are saying on 1st of January will you recognize any revenue? 1 जनवरी को कोई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे आप या नहीं करोगे? सर according to is index 115, in case if any cost is incurred, then परसेंटेज जो प्रोपोर्शन होगा टोटल कॉस्ट का उसके बेसिस पे ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। क्योंकि जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा, सो रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज वेल। जैसे अगर 10 लाख का टोटल कॉस्ट है और 2 लाख का कॉस्ट इंकर हो Okay, जाता है फर्स्ट जनवरी Umesh, को। I have a very simple question actually. My question is very simple. Will you recognize any revenue on 1st of Jan or not? यस सर, वी विल रिकॉग्नाइज, क्योंकि जो डिजाइनिंग का परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो अपना उतना पोर्शन हो गया है, तो वी विल You will रिकॉग्नाइज recognize, right? टू Okay. एक्सेस रेवेन्यू। यस All right. Okay, good. चलिए और आंसर्स लेते हैं. Yes, Jayesh, your answer? Sir, as per Ind AS 115, the revenue will be recognized when the performance obligation is satisfied. Here, as per performance obligation definition, the performance obligation will be distinct if goods or services provided are distinct in nature, and as per the contract, that goods and services are also distinct. If here in this case, I assume that design and construction will depend on both of each other. According to design, the construction will be made. Then there will be one performance obligation, and second is maintenance. But if I assume that design is different and construction is different, then total performance obligation is 3. But as per general, I assume that design and construction will one performance obligation is another performance obligation. So therefore, there are 2 performance obligation. Now comes to the revenue point of view. On 1st March, we recognize the revenue of 12 lakh from April to March, that is over the period of time, we recognize the revenue of 1 lakh for maintenance. Sorry, on 1st of March, how much you will recognize? 12 lakh. 12 lakh. You will not recognize any revenue on 1st of Jan. Yes, because I assume that design and construction will depend on each other. All right. Okay. Okay, great. Fantastic answer. Good job. Right. This is what we were looking for. ठीक है. So यही आंसर है. Okay, अच्छी बात है. आपने इसको कैप्चर कर लिया. ठीक है. So basically मैं पहले इसका आंसर एक बार समराइज कर देता हूँ. इसका पहला आंसर ये है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन has 2 steps. The first step is the goods and services are distinct in nature, right? Is this distinct? Designing, construction, and maintenance, yes, it is distinct. So it looks like that there are 3 performance obligation. But we have to see in the context of contract. तो contract क्या बोलता है? Norm अगर contract ये बोलता है कि जो design करेगा वही construct करेगा, right? Then it will be 2 performance obligation. One is design and construction put together, and second will be maintenance, right? Because they are distinct in nature and service. So one performance obligation तो बिल्कुल भी नहीं होगा, right? ये आपको याद रखना है. और क्योंकि जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल होता है तो ही हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं. तो जिन्होंने 1 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बोला था उनके हिसाब से तो रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर चला जाएगा इसका, जब से मेंटेनेंस चालू हो. क्लियर है आपको?
So here, because design and construction is one performance obligation and this is completing on 1st of March. ठीक है, तो रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज होगा 1st of March को 12 lakhs. Okay, और फ्रॉम 1st of April 1 lakh per annum के हिसाब से every month we will start recognizing. ठीक है, so ये क्वेश्चन आप लोगों को again I am just telling everyone that you have to really complete understand this question and should try to give the answer. I mean cover this concept. This has been asked multiple times. ठीक है, तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ आपको. परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ये हम लोग इंड AS 115 के क्वेश्चंस ले रहे हैं. तो दोज हु आर फ्रॉम अवर क्लास, आप लोगों को तो मैं काफी बार बोल चुका हूँ. जो नए लोग हैं वो भी याद रखिए. बेसिकली 115 एक बैकबोन है, राइट, और बड़ा कंफ्यूजिंग सा स्टैंडर्ड है और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार और रिविजिट कर लीजिए. ओके, so good job. So this question goes to Jayesh. Well done, Jayesh. Okay, now I'll come on to a comparatively simpler question. Okay, yes, this is question number 2. Okay, Ritu. Okay, fastest finger first हो गया आपको. बताइए Yes. रितु. सर इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि goods are dispatched on 31st March or will reach on buyer's place. The revenue will be recognized based on the date when the control will be transferred. So it will depend upon the contract which is being made between the buyer and the seller. If it is on ex-factory basis, then the revenue will be recognized on 31st March. And if it is based on means CIF basis, where the buyer takes the risk of means the seller takes the risk of the insurance and everything. So revenue will be recognized once the control is transferred. That is on 5th April. All right, good. Right. So perfect answer. इसको just for the understanding purpose, yes. और भी अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे. दैट गुड्स डिस्पैच हो रहे हैं फैक्ट्री से 31st मार्च को, राइट. सो नॉर्मली हम लोगों को ये फील आती है कि लाइक 31st मार्च को अगर डिस्पैच हुए हैं तो उनको 31st मार्च को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए. लेकिन हमको तब रिकॉग्नाइज करना है जब ये बायर्स की प्लेस पर पहुंच जाए, राइट, ऑन 5th of April. और ये डिटर्मिनेशन कैसे होगा? ये डिटर्मिनेशन ऐसे होगा कि जब गुड्स ऑन ट्रांजिट है, इन ट्रांजिट है, तब उस पर किसका कंट्रोल है, बायर का कंट्रोल है या सेलर का कंट्रोल है. अगर बायर का कंट्रोल है तो फिर हम उसी दिन 31st मार्च को रिकॉग्नाइज कर लेंगे. और अगर सेलर का कंट्रोल है तो फिर हम उसको 5th अप्रैल को रिकॉग्नाइज करेंगे. मतलब आपको इसमें डिटरमाइन करना है कि जब गुड्स ट्रांजिट में है तब कंट्रोल किसके हाथ. तो हम लोग डायरेक्टली आंसर नहीं कर सकते इस क्वेश्चन का. ये डिपेंड करता है कि FOB बेसिस पे या CIF बेसिस पे. यस, होप एवरीबॉडी इज क्लियर. ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और ये बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियो भी बनता है इसका. रियल लाइफ में भी इसका काफी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रहता है. ओके, गुड जॉब. सो दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज रितु. ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं. पर्सन चेक्स इन होटल. ओके, सो फास्ट, मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ. ऑलराइट, ग्रेट, वैसे ही होना चाहिए स्पीड. यस, मानुषी बोलिए. Sir, revenue shall be recognized when the performance obligation has been satisfied. That is on the 4th April. So revenue shall be recognized on the 4th April. In the current year. In next year, all right. Yeah, next year. Okay. All right, Nehal. Sir, for recognizing revenue, we have to check whether the performance obligation is satisfied over a period of time or at a point of time. In this case, person checks in the hotel. So when we see the condition, so it is said that customer is simultaneously receiving the benefit as the service provider is performing the contract. So one of the condition is satisfied that revenue should be recognized over a period of time.
So revenue will be recognized on 4th April when the billing is done, because we have a certainty of collection. Revenue will be recognized when the billing is done. Okay, so basically, when will it be recognized? On 4th of April, correct? Yes, sir. So you are saying that entire revenue will be recognized on 4th of April. No, sir. 20th March, 31st March का 31st March को होगा, 31st March का से 4th April का 4th April को होगा. Period of time, over a period of time. और 31st आप बिल रेस कर रहे हो 4th April को. हाँ sir, but revenue is accrued, so doesn't matter if billing is afterwards. All right. What entry you will pass on 31st of March? On 31st of March, just a second, sir. Bank account debit? No, we haven't received the amount, right? Correct. So it would be to accrued income, and the debit would be given to revenue account debit to accrued income. Sorry, P&L to accrued income. P&L account debit to accrued income. Yes, sir. All right. Okay. Yes, Himanshu. Sir, the same entry will be passed. Okay. All right. P&L account debit to accrued income. ठीक है? Yes, sir. All right. Yes, रितु आप बोलिए. सर पार्टी का नाम जो होगा उसके अकाउंट से डेबिट होगा बिकॉज रिसीवेबल बन रहा है, और क्रेडिट होगा इनकम का अकाउंट. और जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाला पार्ट है, सेम जो नेहल ने बोला कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाई हो रहा है, तो 31st मार्च को मतलब रिसीवेबल खड़ा करेंगे, और मतलब रेवेन्यू में बुक करना है तो टू रेवेन्यू, और फिर 4th अप्रैल को जब एक्चुअल बिलिंग होगी तो फिर मतलब बैलेंस वाला. All right. So basically, entry. Okay. So first part जो मैं क्वेश्चन पूछा गया है, राइट, क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, वो आंसर तो आप दोनों ने सही दिया है, रितु एंड नेहल. Yes, good job. Basically, your answer is 100% right. Okay. So what is the answer? Answer is that 20th मार्च से 31st मार्च तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा. और उसके बाद 1st अप्रैल से 4th अप्रैल की रेवेन्यू अगले साल रिकॉग्नाइज होगी. मतलब 2 पार्ट में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगी. ठीक है. तो 20 मार्च से 31st मार्च का तक जो रिकॉग्निशन हो रहा है, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं अनबिल्ड रेवेन्यू, राइट. अनबिल्ड रेवेन्यू, ये आपको याद रखना. पूछ सकते हैं वो आपसे, अनबिल्ड रेवेन्यू क्या होता है. तो अनबिल्ड यही होता है जिसमें कस्टमर ने सर्विसेज अवेल कर ली है और अभी बिल रेज नहीं हुआ है. ठीक है. Sir, that is also, sorry to interrupt, sir. Sorry to interrupt. हाँ, बोलिए बोलिए. That is also called unearned income. हाँ, अनअर्न्ड Advance receive. Unearned income, or sir, corporate contract liability. कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी नहीं है ये. कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी वो होती है जिसमें आपको मनी मिल जाता है और आपने अभी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिलीवर नहीं किया. ये उल्टा हो रहा है. यहाँ हाँ जी, आपने हाँ जी, correct. परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिलीवर कर दिया है लेकिन आपको पैसा मिला नहीं है. ठीक है. सो बेसिकली इट इज एन अनबिल्ड रेवेन्यू, राइट. ये आप याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इस तरह से कि व्हाट इज अनबिल्ड रेवेन्यू. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट. सेकंड, जो जर्नल एंट्री है उसकी, ठीक है, जर्नल एंट्री आपने बोला P&L अकाउंट डेबिट. P&L अकाउंट डेबिट नहीं होगा इस केस में क्योंकि ये कोई लॉस नहीं हो रहा है हमें. ठीक है, वो गलत बोला आपने नेहल. द करेक्ट इज बेसिकली डेटर अकाउंट डेबिट. Okay, sir. Yeah. ठीक है, जो भी डेटर है आपके वो डेबिट होंगे टू अनबिल्ड रेवेन्यू. ठीक है, और वो रेवेन्यू फिर आपकी कोर रेवेन्यू का पार्ट बन जाती है. ठीक है, बट एनीवेज गुड आंसर. यस, सो for this one, yes, full marks for Ritu and half for Nehal. All right. Okay, good job. चलिए, अच्छी बात है. Good answers are coming. ठीक है, एक बार आपको मैं
स्कोर भी दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ओके, उसका आंसर मानुषी, एंड आफ्टर दैट अजय, रितु, जयेश, रितु एंड नेहल. ठीक है, लाइक दैट. Okay, at the same time, if somebody has questions also, please ask the questions, because these are the questions which you will face in your real interviews also. All right, now this is another question. Yes, Rukaiya, please answer. So diluted EPS basically means the number of potential equity shares that in future will be converted into equity shares. We consider it in the calculation of diluted EPS. So if the preference shares are convertible, preference shares of two types, non-convertible or convertible. If the preference shares are convertible and it's a cumulative convertible preference share, then the preference dividend amount will be added to the numerator of diluted EPS, and the number of preference shares will be added in the denominator, that is weighted average number of potential equity shares. It will be added in the denominator part, and the amount of preference dividend will be added in the numerator part only if it is convertible preference shares and the dividend is cumulative dividend. And if we are talking about OCI, it will be excluded from the calculation of diluted EPS because it will not affect any income part, like it will not be converted into potential equity share. They are not convertible. So the crux is, if it is not a convertible preference dividend, it will be added, and if it is non-convertible, it will not be added, and OCI will be completely excluded from the calculation. All right, good answer. Yeah, I think if anybody has any question on that, yes, please ask. किसी को question इस पर? सर OCI वाला एक बार वापस बता दो क्या था. OCI will not be considered, because OCI को ऐसे याद रखो कि OCI is an extraordinary income. अकाउंटिंग इनकम नहीं है वो, सॉरी, वो बिजनेस इनकम नहीं है, वो एक अकाउंटिंग इनकम है. तो जब हम ईपीएस निकालेंगे तो OCI को इंक्लूड नहीं करेंगे. ओके सर. Okay, good. Okay, great. Let's move forward. Yes, रितु बोलिए. Sir, lease accounting में we consider first, we give the first preference to means the implicit rate of return to lesser. But if it is not found out, means if we can't find it out, then what we'll use is incremental borrowing rate. And incremental borrowing rate is a rate at which additional borrowing can be obtained by the lessee. That will be used for the lease accounting. Incremental borrowing rate will be Is the cost of getting additional funds if the lessee wants to obtain additional funds from the market, and that is the substitute rate that is being used in lease accounting if implicit rate of return of lesser is not obtainable. all right. Okay, good. Right. So again, yes, 100% right answer. Nothing to add, nothing to less in this one. Okay, good job, Ritu. Okay, so basically, again, lease accounting. So those students who are with whom I'm talking for the very first time, right? These questions you should prepare before you appear for your campus. Yes, काफी बारी questions पूछे गए हैं और मतलब you should be able to answer it well. That is the most important thing, right? And then you should be ready with the cross questions. ठीक है. तो हम लोगों ने जितने क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं उसमें सर्टेनली ये सब क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं. तो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है डेफिनेटली उनको एक कंफर्ट तो है कि लाइक हम लोग वंस वी हैव डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस, क्योंकि कम क्वेश्चंस हैं जो नए क्वेश्चंस है. मोस्ट ऑफ देम आर रिपीटेटिव वंस, राइट? सो इसके बाद अब एक और आगे चलते हैं. BRS is not provided by management, right? What kind of audit opinion should be provided? Yes, Anirudh.
I think it's a disclaimer of opinion, sir. It Why? means if it means if it is material and pervasive to the FS, then we can we are unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, then we can give disclaimer of opinion. Otherwise, qualified. Okay, sorry, वापस बोलिए. So, in case we are unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, then we give two types of opinion, that is qualified and disclaimer of opinion. So, I think this is the same case where we are unable to obtain audit evidence. So, we can give qualified or disclaimer depending upon the pervasiveness. Okay, depending on the pervasiveness. If it is pervasive, then Means then disclaimer, or otherwise if it's material but not pervasive, then qualified. This is, I think, okay. sir. All right, I think this is a very good answer. Yes, great, good answer, Anirudh. Yes. Anybody has any other point of view? Sir, I think that since it is a single account balance, so we cannot consider the misstatement to be pervasive. If we look No, primary no, case here. no. That is an assumption that we are taking, right? So that is not an assumption we should take. Okay. So we have to give both means point of views, that if it is Yes, pervasive, then yes. this. Okay. It could be disclaimer also, it could be qualified also, Okay, sir. depending on the situation. Okay, Yeah. sir. Okay, good. Okay, so Abhi, next question is on the financial management, right? So audit, सबसे पहले इंडेस की अगर हम बात करते हैं तो इंडेस में आपको इंडेस 115, इंडेस 116, ओके, ये दोनों इंडेस आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए. और जितने भी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पास्ट में कवर हुए हैं, राइट, उन क्वेश्चंस को, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने क्लास में अभी कवर करें. एटलीस्ट इन टॉपिक्स को आप अच्छे से देख लेना. बहुत बार ये कवर किए गए हैं, राइट. इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, दैट इज रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट. उसके भी ऊपर भी काफी क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है. अब एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है. सो लेट्स सी कौन आंसर दे पाते हैं इसका. एकदम जो अभी हॉट न्यूज चल रही है, राइट, क्या न्यूज चल रही है अभी, अडानी एंटरप्राइजेस, राइट, उसकी एकदम हॉट न्यूज चल रही है. सो अडानी एंटरप्राइजेस शेयर्स आर गोइंग डाउन, ठीक है. एज अ ट्रेडर, इज इट बेटर टू बाय पुट ऑप्शन और इज इट गुड टू सेल कॉल ऑप्शन? ठीक है. यस उमेश. Sir, it would be better to buy a put option so that we will get the right to sell. Sorry. एक मिनट. ओके, ऑलराइट. हाँ, बोलिए आप रितु. So I think that it would be better to sell the call option, because in the call option we'll get the premium also, and means in the call option the other person has the right to buy the share, so we will get their difference also and get the premium also. But if we will buy the put option, then we have to give the premium also, and the difference we will earn. So there will be means net off we have to see. So in the net cash position, if we see, then selling call option will be more beneficial. You're saying selling will be better. First answer came was buying would be better, okay, and your logic is that you will get the premium, okay. Yes. All right. Vipul. Hello. हाँ विपुल बोलिए. Yes, sir. So basically, if the shares are going down and we expect the same trend to continue, then we should sell the call option, because call option gives the holder of the option a right to purchase the share. So since the share is
believed to be going down, then he may not exercise his option, and we have already received the premium for the sold option. So it's beneficial for us to sell the call option since it won't be getting exercised anyway. It will not be exercised. Yes, since if the share price is going down, then why will the person exercise the option for the higher amount of purchasing cost, since he can buy the same share in the market itself for the lower cost or the ongoing price that will be lower only. देखो, शेयर्स की प्राइस अगर नीचे जाती है तो ये हमारा एक व्यू है, ठीक है, कि शेयर प्राइस नीचे जा रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 100% ऐसा ही होगा, राइट? अगर 100% ऐसा होता, राइट, तो फिर कोई बात ही नहीं थी। हम लोग सभी लोग शेयर, तो जब भी आप कोई भी डीलिंग करते हो तो एक व्यू के साथ करते हो, लेकिन ये 100% होगा या ना होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। यस सर। ठीक है, तो ओके, चलिए, बड़ी अच्छी बात है, गुड व्यू। और बताएं, लेट्स टेक आंसर फ्रॉम yes, Umesh, you have some other answer? Sir, I was just saying that I will stick to the answer क्योंकि सर अदानी का शेयर प्राइस डाउन हो रहा है and buying a put option will give us a right to sell. So in future, even though the price goes down, but the exercise price would already be decided and we will sell the share at that exercise price and we will earn profits. All right. तो देखो, ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, और दिस इज अ क्वेश्चन which you can answer only if you have done little bit of trading, ठीक है, या फिर आपने बहुत डीप में टॉपिक पढ़ा होगा। तो अभी तक मुझे जितने आंसर्स आए, ठीक है, वो आंसर्स थियोरेटिकल है। ओके, इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन थियोरेटिकली ऑल्सो यू कैन गिव अ गुड आंसर, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपको फिर टाइम भी देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग सोचो दैट व्हाट इसका सिंपल क्वेश्चन, इफ यू पुट इट सिंपली, if any share is going down, you should buy a put option or you should sell a call option. As simple as that. Question बहुत simple है। ऑप्शन को खरीदने में और ऑप्शन को बेचने में क्या करना चाहिए, क्या बेटर होता है, ठीक है, किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इट्स वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, एनीवेज आप थोड़ा सोचो, उसके बाद इसका आंसर मैं वापस लेता हूँ आप लोगों से। ऑलराइट, सो इन बिटवीन इन द मीनवाइल, जब आप सोच रहे हो, सो बेसिकली टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए दोज हु आर नॉट our regular students, basically we have the entire recording available for our classes, right? So those who have not experienced the technical questions and you want to see, you want to revise around 200 questions that we have discussed in the class, you can certainly go for the recordings, right, that are available. Okay, and we have covered each and every part related to India's audit, banking, tax, articleship, and HR related questions, right? So those who are struggling with the technical questions, yes, I think it is somewhere around 40 hours of recorded session. Some of the live session will also be covered in that, and if you have any questions related to career and all, that you can discuss, right? So for this one, the recording and all, connect to our office, right? You will have our office number. I'll send the link also in the group, okay, in the chat box. Definitely look for our YouTube channel, right? On the YouTube channel, you will find a lot of stuff. तो उस पे आप देख लो, उस पे आपको काफी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो इफ यू वांट, यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, राइट? व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको काफी डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो चलिए अब हम लोग हमारे कंटिन्यू करते हैं इसी क्वेश्चन पे, दैट व्हाट इज बेटर। और यार रुकइए, बोलिए। Sir, I guess the trader should do both, buy a put option and sell a call option, as it will both be beneficial to him. Put option gives a right to sell. दोनों का पर्पस एक ही है। सर, बट अपन को दोनों में ही फायदा होगा, क्योंकि अगर अपन पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो वी विल गेट अ राइट टू सेल
फिक्स प्राइस, एंड अगर वो एट अ फिक्स प्राइस विल गेट अ राइट टू सेल, एंड अगर प्राइस डाउन हो जाती है तो वील एक्सरसाइज द ऑप्शन एंड वील सेल इट. बट सर, सिंस सेलिंग अ कॉल ऑप्शन, तो वो सामने वाला एक्सरसाइज ही नहीं करेगा, वो ऑप्शन लैप्स हो जाएगा और वी विल गेट द प्रीमियम ऑफ दैट ऑप्शन अमाउंट. क्योंकि अगर प्राइसेस डाउन हो गई एंड फॉर एग्जांपल समवन हैज बाय द कॉल ऑप्शन, he will not exercise that call option because the prices are gone down and he will lapse the call option. But since we have sell the call option, we have initially received the premium for the same, and if we'll buy the put option, so we will exercise it and we'll benefit from that also. So both will be the winning situation for us. देखो, अगेन आप क्वेश्चन क्या है, आप ऑप्शन बाय करोगे या ऑप्शन सेल करोगे, ठीक है. बेसिकली क्वेश्चन ये नहीं है कि दोनों अगर आपको करना हुआ, ठीक है, तो फिर तो कुछ दोनों का पर्पस अलग अलग है, ठीक है. तो यही क्वेश्चन है एक्चुअली. अगर हम जब हमको लगता है कि मार्केट नीचे जा रहा है, तो या तो आप कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन खरीद सकते हो या कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो. ये तो बात सही है कि हम दोनों कर सकते हैं, लेकिन दोनों में क्या बेटर है और क्या प्रॉब्लमेटिक है, वो है क्वेश्चन. तो चलिए क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन. बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है. इसका सिंपल आंसर है आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है. अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, ऑप्शन को खरीदना चाहिए. उससे क्या होगा, आपने सपोज 100 रुपीज का पुट ऑप्शन खरीदा, अब आपकी रिस्क कितनी है, आपकी रिस्क है 100 रुपीज तक की. 100 के ऊपर आपकी रिस्क नहीं है, जितने आपने प्रीमियम पे करी है वही आपकी रिस्क है. लेकिन अगर आपकी रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है, राइट, आप अनलिमिटेड रिस्क ले सकते हो, तो बेसिकली फिर कॉल ऑप्शन को सेल करो, क्योंकि उसमें आपने जितने पे सेल करा है, ठीक है, उसके बाद देयर कुड बी अनलिमिटेड लॉस ऑल्सो. तो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है तो ऑप्शन खरीदना है, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है तो आपको कॉल ऑप्शन सेल करना है. एंड रिस्क फॉलोज द रिटर्न, ये तो आपको पता ही है. तो अब आपकी एक्सपेक्टेशन रिटर्न को लेके कितनी है, उसके ऊपर है पूरा खेल, ठीक है. सो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो लोग सर, ट्रेडिंग पर इसमें ये चीज तो कंसिडर ही नहीं हुई कि अडानी इंटरप्राइज शेयर्स आर गोइंग डाउन, तो मतलब उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा आंसर पे? उससे तो ये इम्पैक्ट पड़ा ना कि आपका व्यू तो यही है कि ये शेयर डाउन जा रहे हैं, ठीक है. अब डाउन जाने में आप या तो पुट ऑप्शन खरीद सकते हो या कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो, दोनों कर सकते हो ना. हाँ, तो मतलब बेसिकली ये अब इन दोनों में से क्या करोगे. अगर मैं पूछता कि पुट ऑप्शन बाय करोगे या कॉल ऑप्शन बाय करोगे, तो आंसर बड़ा सीधा था आपका कि पुट ऑप्शन बाय करेंगे क्योंकि शेयर्स नीचे जा रहे हैं. तो वो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. क्वेश्चन ट्रिकी इसलिए बन रहा है क्योंकि दोनों चीजें होती है जब मार्केट नीचे जाता है. अब इन दोनों में से क्या करना है, समझा. क्लियर है सभी को? यस सर. ओके ओके ओके. सो ये क्वेश्चन अगेन लाइक अगर आप कुछ ट्रेड जैसे कि एक कंपनी है फ्यूचर फर्स्ट करके, राइट, कभी कभी वो पार्टिसिपेट करती है, ठीक है. तो ऐसे किसी क्वेश्चन ऐसे किसी कंपनी के लिए ये टाइप क्वेश्चन आते हैं, ऑल्दो कम पूछे गए, बट फिर भी मतलब पूछे जा सकते हैं. क्लियर है आपको? ऑलराइट. सो आगे चलते हैं. Okay, so this is another question. What are the key ratios considered by bankers while giving term loan? या मानुषी? सर, डेट सर्विस कवरेज रेशियो होती है एक, वो, एंड दे विल कंसिडर बाय द बैंक. एंड कैपिटल गियरिंग रेशियोज होती है, क्विक रेशियो होती है जिसको हम एसेट टेस्ट से भी यूज करते हैं. डेट टू एसेट रेशियोज भी होती है जिसमें हम देखते हैं कि जिसको भी हम लोन प्रोवाइड करें, वेदर ही इज एबल टू रिपे देयर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट्स. एंड डेट टू इक्विटी रेशियोज होते हैं. Good These answer, are the yeah. ratios. Very good answer. So primarily सबसे बढ़िया बात तो आपने ये करी कि DSCR आपने सबसे पहले बोला, राइट. तो आप लोग सभी लोग याद रखना, जब भी आप टर्म लोन लेने जाओ और टर्म लोन के अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको DSCR बताना है, राइट, डेट सर्विस कवरेज रेशियो. ओके, सो वेरी गुड आंसर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोप्राइटरी रेशियो में डेट इक्विटी रेशियो,
total asset divided by total outside liability, that is another ratio one should consider. And apart from that, जो बाकी के ratios होते हैं like profitability ratios and all those, they are ratios, multiple ratios consider होंगे, लेकिन जो सबसे key ratios है, हम अगर उसकी बात करें तो 3 are the key ratios: DSCR, debt equity, and total asset divided by total outside liabilities. All right, good answer, very fast answer. ये अच्छी बात है आप लोगों की कि आप लोगों के आंसर्स फास्ट आ रहे हैं. Okay, good. अच्छा, जिन लोगों ने आंसर्स नहीं दिए हैं, राइट, डोंट वरी, there are definitely you will certainly get you will definitely get the chance. अभी भी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें that you give try and at least try, right. जो लोग ट्राई भी कर रहे हैं, राइट, हम लोग उनको भी कंसिडर करेंगे, ओके, एंड विल ट्राई. जिन लोगों ने आंसर देने का एफर्ट भी करा है, ओके, दे विल एटलीस्ट गेट सम प्राइजेस. आपका आंसर गलत भी होगा तो भी कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, राइट. सो वो भी अपने आप में एक स्पेशल बात है. चलिए और आगे चलते हैं. नाउ फ्यू क्वेश्चंस आर लेफ्ट, ठीक है. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन अगेन. अच्छा, नाउ एक क्वेश्चन लेते हैं ये वाला, इसमें माइनस मार्किंग रखते हैं, थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं गेम में, तो ताकि जल्दी जल्दी जो आंसर दे रहे हैं, ठीक है, वो लोग भी अब सोच के आंसर देंगे. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन. एक छोटा मोटा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, और आपने अगर गलत आंसर दिया, ठीक है, तो आपके -1 हो जाएंगे, ठीक है. सो इसमें नेगेटिव मार्किंग है. चलिए, सो लेट्स टेक दिस वन. Compute peak funding requirement for this business. Take appropriate assumption and compute peak funding requirement for this business. Yes, Sumesh. सर मैंने एक लॉजिक लगाया. आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. मे बी 15 इज द आंसर. ओके, मैं नोट करता जाता हूँ पहले आंसर, उसके बाद आप लोगों से उसका लॉजिक समझ लूंगा. ठीक है. सो 15 बाय उमेश. ओके, देन सौरभ. सौरभ बोलिए, अनम्यूट करिए. सौरभ. ऑलराइट, विपुल बोलिए. सर 12.89. 12.89. Yes, sir. ओके. ऑलराइट, ठीक है. सो 3 आंसर्स आए हैं, राइट. फर्स्ट इज 15, सेकंड सौरभ की आवाज नहीं आ रही है, और विपुल इज 12.89. ठीक है, और एक 30 सेकंड्स और ले लेते हैं, इफ समबडी हैज आंसर. बट आप लोगों को रिस्क है, इसमें रिस्क -1 की रिस्क है.
एंड इफ इट गोज राइट यू विल गेट +2। ये भी एक ऐड कर लेते हैं साथ में। रेस्ट फॉलोज द रिटर्न। अगर सही आंसर गया तो +2, गलत गया तो -1। यस नेहा बोलिए। सिर्फ 15 सर। 15 ऑलराइट। पलक? सर -15। हाँ मतलब 15 जैसे पीक फंडिंग। ओके यस सर। राइट। बताएं पलक क्या लॉजिक है आपका? Sir, I did that EBIT minus capex and ओके calculate the free cash flow. So for Y1, it is EBIT is -4 and capex is 4. So I did that -4 is equal to -8, and in that way I calculate the Y1 to F5. So And Y1 then is you- -8, right? Minus Yes, Y2 is -4, and yes, sir. Y3 is -3. Y4 is -1 and Y5 is 1. And then I total all the Y1 to Y5. all right. So, but it is not like that, na? They are totally different years. How we can consider that total? If we All take right. year 1, year 2, year 3, they are not on the. Okay, 1 second. So सबसे पहले तो आंसर ले लेते हैं, उसके बाद उसके डिटेल में जाते हैं। यस सबसे पहले आंसर उमेश आपने दिया था, राइट? क्या लॉजिक लगाया उमेश आपने? पीक फंडिंग रिक्वायरमेंट पहले एक्सप्लेन करो क्या है। यस सर। सर मैंने ऐसे लॉजिक लगाया था कि एबिटडा ऑलरेडी नेगेटिव है, सो 4 रिकवर करना पड़ेगा और केपेक्स 4 का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, तो ठीक है। वहां पे 8 हो गया। फिर सिमिलरली ईयर 2 में देखिए तो 8 + 4 12 एंड ईयर 3 में 12 + 3 15। अब ईयर 4 में हमारे पास 1 का प्रॉफिट है और 2 का एक्सपेंडिचर है, तो 1 वहां पे बचा। 15 + 1 16 एंड ईयर 5 में हमारे पास EBITDA 2 है और केपेक्स 1 है, तो 1 का वहां पे होगा। 16 - 1 15 ऐसे आया था मेरा आंसर। ऑल राइट, ठीक है। चलिए सो बेसिकली सब 15 आंसर सभी का है, और किसी का कोई अलग आंसर हो तो बता दीजिए, इफ एनीबडी हैज अ डिफरेंट आंसर। Sir, my answer was 12.89 based on I basically discounted the cash flows with 10%, assuming the 10% discount rate. So if we discount the 8431, डिस्काउंट मत सर करो, मेरा आंसर 16 है। नहीं डिस्काउंट मत करो बिल्कुल। yes, sir, so my answer is also 15 only, sir. 15। आपका आंसर कितना है ऋतु? सर मेरा 16 है। 16 कैसे आया? सर मैंने ना ईयर 1 2 3 4 4 के जब एंड पे अपन आते हैं, तो हाँ 4 के एंड पे क्या हो रहा है कि जब जब अपन मतलब ये सब नेट ऑफ करेंगे तो अपना 16 फंड रिक्वायरमेंट है, जबकि ठीक है। ईयर 5 15 है, तो मतलब पीक फंड रिक्वायरमेंट 16 होगा। मतलब जब ईयर 4 के एंड पे अपन, तो मतलब अगर अपन ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने जाएं तो ईयर 4 पे आके ऐसा हो रहा है कि जितना एबिडा में अपन को देना है, मतलब जैसे 4 + 2 + 1 7 देना है, एक अपने को आया तो 6 उधर अपने को देना है, और इधर अगर 4 + 2 मतलब ऐसे करके टोटल करेंगे तो ईयर 4 में सबसे ज्यादा फंड रिक्वायरमेंट है, तो मतलब 16 है आंसर इसलिए। तो ईयर 5 में जो आपको सरप्लस मिल रहा है वो कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, तो ईयर 5 में मतलब ईयर ऑन ईयर अब पीक फंड रिक्वायरमेंट देखना है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करके देखा, तो ईयर 5 में जब नेट ऑफ कर रहे हैं तो 15 रिक्वायरमेंट है, ईयर 4 में 16 है, तो पीक फंड रिक्वायरमेंट देखनी है तो ईयर 4 की होगी वो। ऑल राइट, वेरी गुड आंसर। यस, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऋतु। ओके, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। यस, अब देखो सबसे पहले तो आप लोगों को सर हाँ सर बोलिए। मैं ही जस्ट सर, अगर पीक फंडिंग रिक्वायरमेंट देखने जाए तो ईयर 1 में भी रेट होगा ना सर। ओवरऑल अगर तो देखो ईयर ऑन सबसे ईयर पहले कंपेयर करना है तो कम्युलेटिव क्यों कंपेयर करेंगे अपन? राइट, सो लेट मी एक्सप्लेन नाउ। देखो नॉर्मली क्या होता है, पीक फंडिंग रिक्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो मीनिंग और पर्पस। मीनिंग ये होता है कि
ये नॉर्मली किस केस में निकाले जाते हैं, जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उसके केस में। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, वो जब फंड की रिक्वायरमेंट निकालते हैं कि हमें इस बिजनेस के लिए कितना पैसा चाहिए, तो इसको बोलते हैं पीक फंडिंग रिक्वायरमेंट। आपको पता है कि दुनिया में 10 में से 9 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, और वो किस लिए फेल होते हैं ज्यादा करके, क्योंकि उनके पास फंड शॉर्टफॉल हो जाता है। सो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, एक फंड की रिक्वायरमेंट निकालते हैं कि हमें कितने फंड की रिक्वायरमेंट। अब पहले साल उनको रिक्वायरमेंट है 8 की, अगले साल है 4 की, इसके बाद कितनी है 2 की। तो ये कितना हो गया, 8 + 4 + 2 कितना हो गया, 14। सॉरी 3 है इधर। सो ये कितना हो गया, 50। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ये बिजनेस, आपने 15 आंसर दिया, ये 15 अगर इन्होंने फंड रेज किया होता, तो पहले साल तो बिजनेस चल जाता, अगले साल भी चल जाता, थर्ड ईयर भी चल जाता। फोर्थ ईयर में क्या करते हैं आप? फोर्थ ईयर में आपका बिजनेस नहीं चल पाता, और ये गलती करते हैं जो स्टार्टअप की जो प्लानिंग करते हैं, फंडिंग की प्लानिंग करते हैं, वो यही ये गलती कर लेते हैं, शॉर्ट फंड की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक की रिक्वायरमेंट हो रहा है इस जगह पे, तो इसलिए यू नीड टोटल 16। यहाँ पे आपको +1 की और रिक्वायरमेंट है। अगले साल से तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अगले साल से तो आपका EBITDA विल कवर अप ऑल योर लॉसेस, योर फंड रिक्वायरमेंट, राइट। तो आपके पास इंटरनली उतना पैसा जनरेट हो जाएगा, आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। So basically, peak funding requirement is the total maximum fund requirement for any particular business. Okay. And you have to consider all total requirement for operating and capital expenditure. Yes. So very good answer. But yes, good answer from all of you. But please remember the practical usage of peak funding requirement. ठीक है, ये आज के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी आजकल आपको पता ही सब कुछ स्टार्टअप्स और इससे से रिलेटेड बातें होती रहती है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। Sir, we So, won't consider a discount rate for the same. डिस्काउंट रेट की देखो इसलिए जरूरत नहीं होती है। नॉर्मली कंपनियां टोटल रिक्वायरमेंट तो निकाल लेती है कि हमको टोटल 16 की रिक्वायरमेंट है, पर फंडिंग एक साथ नहीं उठाती है। पहले साल 8 की उठाएगी, अगले साल 4 की उठाएगी, फिर 3 की उठाती, फिर 1 की उठाती। तो वो फंडिंग को ब्रेक कर लेती है एक साथ पूरा फंड लेने की बजाय। आपने आपके जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको बोला कि हमको रिक्वायरमेंट तो टोटल 16 की है, लेकिन फेजेस में है वो रिक्वायरमेंट। Okay, sir. ओके, गुड गुड। चलिए, सो आगे चलते हैं इसके बाद। सो बेसिकली दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू टेक्निकल वंस। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस मैं अब आपसे जनरल नॉलेज के और क्वेश्चन पूछता हूँ, और उसके बाद हम लोग टोटल कर लेते हैं। ठीक है, सो एक बार मैं अगेन आई शो यू व्हाट इज द was given how many answers. ठीक है, so this is how it looks like. So we have got 10 questions. ठीक है, 10 questions के answers have come like this. ठीक है, केवल 8th नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं दे पाए हो, बाकी सभी क्वेश्चन के आंसर आ गए। ठीक है, अब हम लोग जो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू जनरल नॉलेज। ओके, थोड़ा जीके भी आप लोगों का टेस्ट कर लेते हैं। Okay, what is the current GDP in absolute terms and what is the growth rate? हाँ मानुषी बताएं। विपुल बोलिए। Yes, sir. So, Hello. हाँ बोलिए Hello. विपुल बोलिए। sir, the growth rate in absolute, the GDP in the absolute terms is around 3 lakh crores for India, and in growth rate terms, it's around 8.5 or 6% annual growth rate. For 2022 or for projected for 23? It's I'm telling about 22, and for the next fiscal year, it's projected around 9% annual growth rate. All right, okay.
Okay, so 3 lakh crore is in rupees or dollars? USD, sir. All right, Dollars. good. Okay, great answer. Yes, so we have got the right answer. Yes, everybody, please remember, आपसे पूछा जा सकता है कि what is your view on the economy? ठीक है, so ऐसे केस में आपको ये याद होना चाहिए. Okay, उसके बाद एक और hot topic. Yes, who can talk about 3 key budget changes? हाँ मानुषी बोलिए. सर फर्स्ट जो की है, पहले तो इनकम टैक्स पे ही आ जाता है, डायरेक्ट हाँ. टैक्स पे, कि जो आपकी रिबेट होगी इन द न्यू टैक्स regime will be up to 7 lakh and there will be no tax up to required to be paid up to 7 lakh income. Then Okay. if your income is 9 lakh, then you have to just pay 5%, that is 45,000. And if your income is 15 lakh, then you have to just pay 10%, that is 1.5 lakhs. And That is first, related to tax. Okay. After yes that. sir. And that is the key. And that हम जो अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे लेकर आऊँ, तो हमारे जो बहुत सारे स्कीम्स मतलब जो गवर्नमेंट करना चाहती है, वो आगे वो करेगी, मतलब इनिशिएट करेगी, जैसे जो कृषि किसान है योजना, वो सारे स्कीम्स पे वर्क करेगी. एंड अभी G20 हमारे सितंबर में होने वाला है इंडिया में, तो उसके बेसिस पे सारा जो इंडिया है वो रेनोवेट हो रहा है, मतलब रोड्स वगैरह बनाई जा रही हैं. एंड बहुत अच्छी नहीं मीटिंग नहीं होने नहीं वाली. नहीं, ये तो वो है बेसिकली, ये तो बजट के व्यूज है, राइट? ऐसा हो स्पेसिफिक चेंजेस. द फर्स्ट वन इज वेरी स्पेसिफिक, यू टॉक्ड अबाउट स्पेसिफिक चेंजेस. ऐसे ऐसे तो हर बजट में होता है, एग्रीकल्चर विल बी इम्प्रूव, रोड्स विल बी इम्प्रूव, वैसे नहीं. वो तो हर बार अलोकेशन होता है. स्पेसिफिक चेंजेस लाइक द फर्स्ट वन यू टॉक्ड अबाउट. Okay, sir. It could be related to taxation, it could be related to GST, but it has to be very specific. हाँ Sir, विपुल may I एंड जो सर सॉरी सर जो सरचार्ज है वो 25% हो गया है. जो पहले हमारा था 42.474%, वो अब रिड्यूस होके 25% हो गया है. हाँ, this is good one. सरचार्ज. Yeah, good answer. the Yes, earlier surcharge rate was 37%, sir, not 42. 37 था. Correct. और वो भी किसके ऊपर था? For income more than 5 crores. More than 5 crore, right? जिसकी अब इनकम 5 करोड़ से ज्यादा थी. एंड सर अब जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है वो MSMEs के लिए 3 करोड़ हो गई है. एंड जो हमारे इंडिविजुअल्स है वो 50 lakhs होता था पहले, अब वो 75 lakhs हो गया है. Sorry, come again on that. सर जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन था लाइक 44 ADA एंड 44 AD जो था, दैट इज फॉर जो फर्म्स वगैरह थी, MSMEs पे था, वो अब 3 करोड़ एंड 75 लाख हो चुका है. All right, उसकी लिमिट्स चेंज हो गई. Good. ठीक है, so great. So these are the 3 key changes, right? ऐसे ही आप लोग बाकी चेंजेस भी डेफिनेटली कवर करिए. क्लास में हम लोग कल एनीवेज डिस्कस करेंगे. यस, वी अलॉटेड द टॉपिक. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड. ठीक है, अगर कोई हम लोग एक बार टोटल कर लेते हैं. अगर किसी 2 लोगों के क्वेश्चंस अगर एक स्कोर एक जैसा आता है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिससे कि लाइक फाइनली डिसाइड कर पाएंगे कि हु इज द विनर. ठीक है, सो बेसिकली Ajay has scored 1, Ritu has 1, 2, and 2 marks for this. So Ritu has got 4. Then Jayesh has 1, Nehal 1, Rukaiya 1, Anirudh 1, Manushi has 1, 2, and 3. Okay, good job. And Vipul has got 1. All right. So ऐसे तो 3 आंसर्स हैं, both Manushi and Ritu. लेकिन because Ritu has given that answer, जिसका मैंने 2 marks का कहा था. So, okay, so it has given a score of 4 for Ritu. Okay, so yes, big round of applause for Ritu. Well done. You have won the competition for today, right? You are the winner. Okay, great job. And definitely the second scorer is Manushi. So big round of applause for Manushi also. And then we have so many other winners. Those who definitely participated also. Okay, great job.
So fantastic job, everyone, those who have participated and have contributed in this particular session. It has been definitely quite exciting to discuss with you, and the best part that most of you were able to answer. I mean, except one answer, you were able to answer almost all the questions. So I'm very happy with your performance. Okay. So great job. What you have to do is you have to जितने भी लोगों के मैंने नाम बताए यहाँ पे, ठीक है, एक बार वापस देख लो आप लोग. Okay, all these ones. Okay. So all of you, please drop a message. Okay. आपको मैसेज में क्या लिखना है? You simply have to drop a message writing your GPay or PhonePe number. Okay, GPay और PhonePe number आप किस नंबर में भेजेंगे? जो हमारा ऑफिस नंबर है, right? So they will send the cash price to you. Okay, those who are new, they will get some discount also on our products. Okay, and definitely it will be cash price for everyone. Okay, so great job. Office number is this one, right? If you can see this one, I'll write it on the chat box also. Okay, so this is our office number. Okay, इस पे आप अपना जीपे या फोन पे नंबर भेज दीजिए. ओके, सो मजा आया आप लोगों से वापस सभी लोगों से बात करके. अब आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज बताएं मुझे. सर हाँ बोलिए. सर हमें इसकी कैन वी गेट दिस some PDF for these questions so that we can prepare for that also for the interviews. So basically we will we will upload it on the YouTube as well, right? Okay, okay, sir, So definitely. you will get all these questions, I'm sure. Okay, sir, thank you. Okay, great. So well done, everyone. और अगर और कोई आपकी क्विक क्वेश्चंस हो तो आप बताएं. अदरवाइज कल हम लोग 11 o'clock पे जो रेगुलर क्लास है आपकी ग्रुप डिस्कशन होगा उसमें, तो वो हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर. बाकी अगर किसी का कोई क्विक क्वेश्चन हो, कल से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग भी आना स्टार्ट हो जाएगी, तो आई एम श्योर फिर आप लोगों के डिस्कशन थोड़े कंपनी स्पेसिफिक हो जाएंगे. बट फिर भी जो नए लोग हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज टेल मी. All right, so thank you very much once again, and again thank you very much for your active participation, and I'll see you in the sessions. Bye bye, good night. Good night, sir. Bye. Good night, sir. Bye. Thank you, sir.